हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट कलर कॉम्बिनेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि घर का यदि पेंट करवा रहे हैं तो कलर कॉम्बिनेशन किस तरह होना चाहिए, जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं। और घर में पेंट करने से पहले आपको कौन सा पेंट करना चाहिए जो कि आपको अच्छा शाइनिंग और वॉशेबल हो सके। अभी देख सकते हैं इस बिल्डिंग में मेरा पेंटिंग वर्क का काम चल रहा है, जो कि हमने खुद से इसको डिज़ाइनिंग किया है। तो इस तरह से वीडियो में बनाते रहता हूँ। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के मैं वीडियो लाते हूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों रिश्तेदारों भी घर पेंट करा रहे हैं तो ज़रूर इनको बताएं कि इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मिनिमम आपको 4 से 5 कलर होना है। 4-5 कलर कॉम्बिनेशन है क्या है कि आपको अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लगेगा। और आपको लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन रखना है, या फिर आपको सभी लोग क्या क्या करता है कि सभी डार्क कलर रख देते हो, उससे आपको छपरी कलर दिखने को मिलेगा उस तरह से। अभी देख सकते हैं इस बिल्डिंग का मिनिमम 6 से 7 कलर कॉम्बिनेशन है। और लाइट डार्क कलर कॉम्बिनेशन आपको जहाँ जहाँ भी आपको लाइट कलर बड़ा वाल है उस पर आपको लाइट कलर डालना है। और जो भी बॉर्डर डिजाइन इस सब में है तो आपको सजाना है घर को है। तो सबसे मैंने हर कोई का एक सपना होता है कि मेरा घर अच्छा दिखे, साफ और अंदर का सीपेज भी ना हो। तो इसी तरह से आपको बिरला ऑपस पेन, जो कि न्यू स्टार है, जो कि न्यू स्टार बहुत अच्छा है, कम प्राइस भी है और ज़्यादा वॉशेबल फुल प्लास्टिक उसमें दिया है। तो मैं चाहूँगा कि बिरला ऑपस के पेन यूज करें। तो अभी नया ट्रेंडिंग बिरला ऑपस है। और इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन कराएं। थैंक यू, फुल वॉच करें। बहुत सारा कलर है, आपको भी कलर यूज करके आप पेंट को सजा सकते हैं। थैंक यू। Racing my own thoughts into the silence, seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos I forgot.